Hello students, today I am here with a new video of cost of consumable stores. Cost of consumable store is very important topic of non-for-profit organization. Its meaning is non-profit organization consume consumable items such as stationery is consumed in office, medicine in the hospital, sports material by a sports club and so on. In such case, separate stock account for each of the consumable items is prepared to determine the consumable items during the year. Income and expenditure account will show correct surplus or deficit only if goods consumed during the year are debited to income and expenditure account. Closing stock is shown in the current year balance sheet only. कंज्यूमेबल आइटम का मतलब होता है कि ऐसे जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं सच एज स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड होती है वो ऑफिस में होती है, मेडिसिन जो कंज्यूम्ड होती है वो हॉस्पिटल्स में होती है, स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम्ड होते हैं वो स्पोर्ट्स क्लब में होते हैं। तो हमें सिर्फ वही आइटम, वही कंज्यूमेबल आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर में कंज्यूम्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग में है, ड्यूरिंग द ईयर में हमने 5 लाख रुपीज की स्टेशनरी और परचेज कर ली। अब हमारे पास टोटल हो गए 5 + 1 6 लाख रुपीज और उसमें से 2 लाख रुपीज की स्टेशनरी ईयर के एंड में हमारे पास बच गई एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें यह अमाउंट निकालनी है कि ड्यूरिंग द ईयर में कंज्यूम्ड कितना हुआ। तो 1 लाख रुपीज का ओपनिंग स्टॉक, 5 लाख रुपीज आपने परचेज किया, 6 लाख में से 2 लाख रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 4 लाख रुपीज की वो ड्यूरिंग द ईयर में कंज्यूम्ड हमने करी है। और इसी अमाउंट को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है। दिस इज फॉर्मेट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर और आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर और सप्लायर ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। देन वी विल एड एडवांस पेड to creditor of stationery minus closing advance paid to creditor of stationery, opening creditor माइनस होंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होंगे। इन सबका जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो होगा क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको रेड कलर से लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसमें कैश परचेज को प्लस करेंगे। जब क्रेडिट परचेज और कैश प्लस परचेज प्लस करेंगे आप, तो आपके पास टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर आपने कोई स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर में सोल्ड आउट करी है तो आप उसे माइनस करेंगे और उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस करेंगे बच्चों और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आप माइनस करेंगे। और जो आपके पास ये फिगर आएगी रेड कलर में, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वो अमाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर में आपने कंज्यूम्ड करी है। इसी अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे। नोट, इफ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो यूज ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर बिकॉज ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन इट। इट मीन्स टू से, अगर क्वेश्चन में परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है तो आप ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को यूज नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर को कैलकुलेट करते समय। अब आपको मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूं कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में डिफरेंस क्या है। सपोज आपने कार परचेज करी जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज है और उसमें से आपने डाउन पेमेंट अभी 2 लाख रुपए ही करी है कुल। तो 5 लाख रुपीज की जो कॉस्ट है, जो कार आप परचेज करके लाए हैं, वो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है और उसमें से जो 2 लाख रुपीज की अमाउंट आपने पे करी है वो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर और सप्लायर है। दैट्स द डिफरेंस। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है तब आप ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को यूज नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाउ टू शो द कंज्यूमेबल आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर। इसमें आप जितना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने ड्यूरिंग द ईयर में कंज्यूम किया है उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आपने किसी स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा है और उस पर आपको अगर प्रॉफिट हो गया है
that it will come credit side of the income and expenditure account. Now come to closing balance sheet. Closing creditor will come liability side. Advance paid to supplier at the end of the year also come in the liability side, and closing stock will come in the asset side of the balance sheet. Similarly, this is opening balance sheet. In opening balance sheet, opening creditor will come in the liability side, advance paid to supplier in the beginning also come in the liability side, and closing stock will come in the asset side of the balance sheet. Now this is problem number 1. From the following information, calculate the amount of stationery consumed during 1920. This is format of receipt and payment account, and we total paid stationery rupees 12,000 rupees here. Amount paid to creditor is 12,000 given a question mein. 6,000 rupees is opening stock, 2,000 rupees is closing stock, 9,000 rupees is opening creditor, and 4,500 rupees is closing creditor. How we will calculate the cost of consumable item? This is solution. First, amount paid to stationery during the year is 12,000. We will minus opening creditor and add closing creditor. Then we will get the stationery purchased during the year 7,500. In this amount, we will add opening stock and minus closing stock. Then we will get 11,500. 11,500 is the amount of stationery which is consumed during the year. And the amount which is consumed during the year, it will come in the expenditure side of the income and expenditure account. Now come to closing balance sheet. Closing creditor will come in the liability side, and closing stock will come in the asset side of the balance sheet. Similarly, opening balance sheet, creditor in the beginning will come in the liability side, and opening stock will come in the opening balance sheet in asset side. Now come to problem number 2. From the following information, calculate the amount of sports material to be shown in expenditure side of income and expenditure account, and also show the relevant information in the balance sheet. This is some information is given. Opening stock is 4,000, closing stock is 6,000, opening creditor is 8,000, closing creditor is 11,000, advance paid to supplier in the beginning of the year is 20,000, advance paid to supplier at the end of the year is 25,000, and additional information is payment to supplier for the sports material during the year is 2,20,000. Now come to the solution of this question. Total amount paid is 2,20,000. We will add closing creditor and minus opening creditor. Then we will add advance paid to supplier in the beginning of the year and minus advance paid to supplier at the end of the year. Then we will get 2,18,000, and 2,18,000 is credit purchase during the year. Then we will add opening stock and minus closing stock, and we will get 2,16,000 rupees, and 2,16,000 rupees is the amount which is consumed during the year. And the amount which is consumed during the year will come in the expenditure side of the income and expenditure account. Now come to closing balance sheet. Advance paid to supplier at the end will come in the liability side. Creditor at the end will also come in the liability side, and closing stock will come in the asset side of the balance sheet. Now come to opening balance sheet. Advance paid to supplier in the beginning will come in the liability side. Creditor in the beginning also come in the liability side, and opening stock will come in the opening balance sheet in the asset side. This is problem number 3. From the following information, calculate the amount of sports material to be shown in income and expenditure account of income and expenditure account, and also show the relevant information in the balance sheet. This is amount paid to supplier during the year 31st March 2020, that is 12 lakh rupees. This is closing creditor 6 lakh rupees, opening creditor is 3 lakh rupees, opening stock is 2 lakh rupees, and closing stock is 1,50,000 rupees. Now come to solution of this question. This is solution. Payment made to for stationery is 12 lakh rupees plus creditor at the end minus creditor in the beginning. Then we will get 15 lakh rupees, and 15 lakh rupees is credit purchase during the year. Then we will add opening stock in it and minus closing stock from it, and we will get 15,50,000. 15,50,000 is the amount which of stationery which is consumed during the year, and the amount which is consumed during the year, it will come expenditure side of the income and expenditure account. Now come to closing balance sheet. Closing creditor will come liability side, and closing stock will come in the asset side. Similarly, opening balance sheet, opening creditor will come in the opening balance sheet in the liability side,
and opening stock will come in the asset side of the balance sheet. Now problem number 4. From the following information, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2020. Opening stock 2 lakh, closing stock 3 lakh, opening creditor 15 lakh, closing creditor 19 lakh. Medicine purchased during the year is given in the question instead of payment paid to supplier. I earlier told that whenever purchased during the year given in the question, no use of opening creditor and closing creditor while calculating cost of consumable items. So this is solution of this question. Purchase of medicine during the year is 35 lakh rupees. We will add opening stock and minus closing stock. यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का यूज इसलिए नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि जब भी परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम उसको यूज नहीं करते कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं. तो हमारे पास टोटल कंज्यूम्ड आया मेडिसिन का 34,000, जिसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया. नाउ कम टू क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग क्रेडिटर विल कम इन द लायबिलिटी साइड and closing stock will come in the asset side of the balance sheet. Now come to problem number 5. How you show the following information in the final account of NPO ended 31st March 2020. This is format of receipt and payment account. To sale of sports material, आपने 20,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड आउट किया है 26,000 में, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,000 रुपीज का है. ये आपने क्रेडिटर को पेमेंट मेड करी है 61,000 की, और इतना आपने कैश परचेज करा है. Now this is opening stock, this is closing stock, opening creditor and closing creditor. Now come to solution of this question. Payment made to creditor of the sports material is 61,000. Add closing creditor minus opening creditor. Then we will get 69,000 rupees as credit purchase during the year. We will add 10,000 rupees cash purchase into it and we will get 79,000 rupees is total purchase during the year. Then we will add opening stock of rupees 20,000 in it and minus 25,000 rupees from it. Then we will get 74,000. अब 74,000 में से आपको 20,000 रुपीज का सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस करना है जो उसकी बुक वैल्यू थी. इसे माइनस करने के बाद आपके पास 54,000 आ रहा है. तो 54,000 है वो आपने ड्यूरिंग द ईयर में कंज्यूम्ड करा है और इसीलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. और जो प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपीज की स्पोर्ट्स मटेरियल को आपने 26 में जो बेचा था वो 6,000 रुपीज आपके पास इनकम साइड में आएगा. नाउ कम टू क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग क्रेडिटर विल कम इन द लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक विल आल्सो कम इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस. I hope you easily understood all 5 questions. If you have any doubt, you can text me on my WhatsApp number which is I already mentioned to you. Thank you very much.